हेलो 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 हाँ हाँ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ WhatsApp रे जो लिंक टा आस्थिला मते लाइव क्लास रो हेलो हाँ एक्चुअली मु फोन रे आंसर की टा भी देखुची तो ए टैब टा खाली मझिरे मझिरे एमती खोलिले चलिबनी हेलो हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग आज हमें गुरुकुल रो प्रिलिमिनरी 11th नंबर ऑफ मॉक टेस्ट को डिस्कस करिबा पर क्वेश्चन 2 to hardly 2 to 3 minutes हमें डिस्कस करिबा विदाउट वेस्टिंग further time. So first question कहूची कि consider the following statements. First statement, the president can summon either house of the parliament. The governor can dissolve the state legislative assembly. The parliamentary जो दीटा हाउस रोची गोटे होची लोकसभा आ गोटे राज्यसभा तो प्रेसिडेंट दीटा जाक हाउस को डाकी परिबे यू मीन समन करि परिबे आ ए पर्टिकुलर प्रोविजन टा आर्टिकल 85 रे मेंशन रहिची हाउएवर एटा प्रेसिडेंट करो गोटे डिस्क्रिशनरी पावर नुए this is not a discretionary power of the president. President can act on aid and advice of council of ministers headed by chief minister. So statement 1 is correct. If statement 2 देखिबा governor can dissolve the state legislative assembly. एटा correct अछि. Under article 174 what happens is गवर्नर को पाखे पावर थाए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बा विधानसभा को भंग करि परिबे से तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 is correct. Now coming to second question, assertion reason type ro question. Assertion एटी अछि the governor is a nominal executive head at the state level. Reason तार होछि the real executive powers lie with the chief minister and the council of ministers. Okay. Okay, the answer is yes. The governor होचंदी nominal executive head बा राज्य स्तर रे जणे
नामांतर कार्य निर्वाही मुख्य बोली तांकु कुहा जाई थाए गवर्नर को रियल एग्जीक्यूटिव पावर होल्ड करूचंती सी होचंती चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बट किछिटा स्पेशल सिचुएशन रे गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर रोचे बट एटा ई क्वेश्चन में मेंशन हैनी सो करेक्ट आंसर विल बी ए बोथ assertion and reason are true that governor होचंती nominal executive head and real executive powers रोची chief minister and council of ministers को पाखरे तो R is the correct explanation of A. Now coming to question number 3. Which of the following are the standing committees of the parliament? First of all एठी देखो standing committees कौन दी प्रकार कमिटी थाए गोटे होची standing आ गोटे होची ad hoc. Standing committee होची permanent committee. Permanent committee माने parliament session रे थाउ कि न थाउ they work. ओके यांकर मेंबर्स बोथ राज्यसभा और लोकसभा रु सिलेक्ट हेतांती ब्रीफ रे देखियो गले पब्लिक अकाउंट्स कमिटी रा काम कोन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को एग्जामिन करिबा ठीक अछि आ एस्टिमेट्स कमिटी रा काम कोन बजट एग्जामिन करिबा एंड सजेस्ट करिबा कि गवर्नमेंट फंड्स केमिति एफिशिएंटली यूज करा जाई परिबो कमिटी ऑन पिटिशंस तांको काम कोन पब्लिक द्वारा जो पिटिशन पार्लियामेंट को जाई थाए पब्लिक पार्लियामेंट को जो पिटिशन देला ताकू एग्जामिन करिवे और पब्लिक इंटरेस्ट रे कोन एक्शन निया जिवो ताकू सजेस्ट करिवे बट फोर्थ ही जो कमिटीटा अछि कंसल्टेटिव कमिटी ऑन डिफेंस दिस इज नॉट अ स्टैंडिंग कमिटी कंसल्टेटिव कमिटी ऑन डिफेंस रहिबा एटा गोटे पार्लियामेंटरी कमिटी नुहे दिस इज एन इनफॉर्मल कमिटी दिस इज एन इनफॉर्मल कमिटी so clearly एठी option B A B and C that is public accounts committee estimates committee committee on petitions होचंदी standing committee ठीक अछि fourth questions देखिबा with reference to the governor's powers consider the following he appoints the chief minister correct yes governor CM को नियुक्त बा अपॉइंट करि थांती किंतु एठी भी देखिबा कि एटा भी तांकर पर्सनल चॉइस एटा नुए एटा तांकर डिस्क्रिशनरी पावर नुए मेजॉरिटी पार्टी बा कोलिशन पार्टी रो लीडर को से अपॉइंट करिवे तेनु एटा गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेलिटी हिसाब रे देखा जाए एटा पर्सनल प्रेफरेंस नुए सेकंड ऑप्शन रे कोन कहिची ही कैन रेकमेंड प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट एटा भी करेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन रे जहा प्रोविजन रहिची जदी स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हिसाब रे एक्ट करि पारला नै कि फंक्शन से करि पारुनी तो गवर्नर प्रेसिडेंट रूल पाई रेकमेंड करि परिबे आउ एटा मेंशन कोथरे अछि आर्टिकल 356 रे एटा ए पावर ता ताकू दिया जाई छि एटा मेंशन करा जाई छि प्रेसिडेंट रूल को स्टेट इमरजेंसी भी कुआ जाउ छि आ प्रेसिडेंट रूल दा केते समय पाई लागे 6 मंथ्स पाई आउ एक्सटेंड हेई परिबो एटा फर्दर अप टू 3 years with parliamentary approval okay option third he nominates one member from the Anglo-Indian community to the legislative assembly eta wrong 104th constitutional amendment act pore Anglo-Indian nomination ta uthi jai chi eta ebe au mane function re nahi so answer will be A 1 and 2 only next question ku jiba next question kahichi arrange the following committees of parliament in order of their year of establishment eta factual question eta ro data mane rakhi debe कोटा केबे establish हेइतला को कमिटी केते बेले estimates committee टा 1950 रे हेइतला committee on privileges it was formed on 1951 committee on public undertakings form हेइतला 1964 रे आउ DRSC हेइतला
केबे 1993 रे तो क्लियरली बी देन ऑप्शन नंबर बी ए एंड सी. Question number 6. What is the maximum number of members allowed in the legislative council of a state? ठीक अछि एई जो प्रोविजन टा अछि नोट करिवे आर्टिकल 171 रे जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रहिला स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बा विधानसभा रे जेतेटा सीट रहउची तार 1/3 नंबर को एक्सीड करि परिबो नाही स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बा विधान परिषद रा सीट आउ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल रा सीट 40 रु कम हे परिबो नाही. फॉर एग्जांपल जदि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पाखरे जदि 90 टा सीट रहिला तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल पाखरे केते रहबो तार 1/3 मींस 30 एटा ओडे एग्जांपल पाई मोइटी कहली तो क्वेश्चन नंबर 6 रा आंसर टा कोन हबो ए 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली आर्टिकल 171 रे एटा अछि मन रखिबे. क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7 कौन कहिछि in the context of Indian Parliament the significance of 0 hour. 0 hour विषय एठी पचारछि 0 hour lies in 0 hour कौन 0 hour 0 hour से टाइम जो समय रे पार्लियामेंट रे जो मेंबर्स रहिले अर्जेंट पब्लिक इंपोर्टेंस उपरे इश्यूज रेज करंती विदाउट एनी प्रायर नोटिस आउ ये इश्यूज को रेज करिबा पई प्रायर नोटिस किछि दरकार नै तो ताको कहिताउ 0 आवर. क्वेश्चन पार्लियामेंट सेशन रो आरंभ होबा परे फर्स्ट क्वेश्चन आवर हुए आ क्वेश्चन आवर रो इमीडिएट एंडिंग परे ही 0 आवर टा स्टार्ट हुए. ए प्रोसेस द्वारा पार्लियामेंट रे गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी भी थाए आ पब्लिक इश्यूज उपरे डिस्कशन भी हुए. So the answer will be B, asking urgent questions without prior notice. Question number 8. Question number 8 कहूची consider the following statements regarding the legislative assembly. ठीक अछि its tenure can be extended during a national emergency. Second statement, it cannot be dissolved before completing its 5-year term. तो फर्स्ट स्टेटमेंट को आमे जे डिस्कस करबा नॉर्मली असेंबली रो टेन्योर केते थाय लेजिस्लेटिव असेंबली रो जो रहिला तार टेन्योर केते थाय तार टेन्योर 5 इयर्स थाय. नॉर्मली असेंबली रो टेन्योर जो 5 इयर्स थाय इमरजेंसी सिचुएशन रे कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार असेंबली रो टेन्योर को 1 ईयर बाय 1 ईयर एक्सटेंड करा जाय परिबो. ठीक अछि फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट किंतु इमरजेंसी ओवर हैला परे एठी आ गोटे इंफॉर्मेशन नोट करिवे इमरजेंसी रे तो एक्सटेंड होची किंतु इमरजेंसी ओवर हे गला परे कोन इमरजेंसी ओवर हे गला परे मैक्सिमम 6 मंथ भीतर फर्दर इलेक्शन भी करा जाई पारे. ए प्रोविजन दा आर्टिकल 172 क्लॉज 1 प्रोविजन रे इटा मेंशन रही छि कॉन्स्टिट्यूशन रो. सेकंड स्टेटमेंट इट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड before completing its 5-year term. This statement is wrong. Governor किछिटा सिचुएशन एमती अछि जोथरे असेंबली को 5 वर्ष तांकर नॉर्मल टेन्योर जो 5 इयर्स रहिला ता आगुरु भी डिसॉल्व बा भंग करि परिबे. फॉर एग्जांपल जदि गवर्नमेंट हाउस रो फ्लोर रे मेजॉरिटी लूज कर दिए जदि गवर्नमेंट रो मेजॉरिटी रही बनी तो से डिसॉल्व हे परिबो. हंग असेंबली सिचुएशन रे चीफ मिनिस्टर जदि रेकमेंड करंदी गवर्नर को आ स्टेट रे जदि किछि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आसिले भी
लेजिस्लेटिव असेंबली 5 इयर्स तार टर्म नॉर्मल टर्म पूर्व डिसॉल्व हो पारिबो ठीक अछि तो आर आंसर कोन हबो ए 1 ओनली क्वेश्चन नंबर 9 which of the following discretionary powers are available to governor discretionary power माने जे ताको निज इच्छा रे ए पावर गुडा को से एक्सरसाइज करि परिबे नॉर्मली कौन हुए कि गवर्नर सबु काम सीएम बा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एडवाइस रे करंती किंतु सर्टेन सिचुएशंस एमिति अछि जोडी गवर्नर निज इच्छा रे डिसीजन नै परिबे ए सबु को डिस्क्रिशनरी पावर कुआ जाए करेक्ट तो आर आंसर हबो ए 1 एंड 2 मु कहूची फर्स्ट रिजर्विंग अ बिल फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसीडरेशन एटा गोटे डिस्क्रिशनरी पावर आको मने रखिबे एथरे बुझिबार किछि नै and second रहिला appointing a chief minister when no party had a clear majority ऊपर भी मैं डिस्कस कली जेतोले कोनोसी पार्टी रो क्लियर मेजॉरिटी नथिबो तो से चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करिबारे गवर्नर ताकर डिस्क्रिशनरी पावर एक्सरसाइज करि परिबे डिसमिसिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नाही एटा ताकर डिस्क्रिशनरी पावर नुए तो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 इज करेक्ट आउ ताकर डिस्क्रिशनरी पावर जदी नोट करिबा को गले recommendation of president reservation for bills during the president rule एटा गोटे हे परिबो recommendation of bills to president आ गोटे ताका डिस्क्रिशनरी पावर होची रिजर्वेशन बिल को से रिजर्व करि परिबे ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स रूल प्रेसिडेंट्स रूल ठीक अछि ऑप्शन ए 1 एंड 2 क्वेश्चन नंबर 10 which of the following are the functions of the parliamentary committees first ensuring accountability of the executive then second detailed scrutiny of the legislation third option investigating matters of public importance fourth option dismissing ministers for misconduct correct answer will be a b and c ensuring accountability gote gote kari dekhiba ensuring accountability of executive parliamentary committees executive रो जो actions रहिला ताकर काम कोन ताकू स्क्रूटिनाइज करिबाटा स्क्रूटिनाइज करंती ता ऊपर से रिपोर्ट देई थांती तो स्क्रूटिनाइज कले रिपोर्ट देले तो एथिरे कोन हैला एग्जीक्यूटिव रे अकाउंटेबिलिटी टा एन्श्योर हैला ऑप्शन बी कोन कहूची डिटेल्ड स्क्रूटिनी ऑफ लेजिस्लेशन जेते बळे लॉ पास हुए ता पूर्वरो कमिटीज बिल्स को डिटेल स्क्रूटिनाइज करंती डिटेल भाबरे स्क्रूटिनाइज कले तो एटा डिटेल स्क्रूटिनी ऑफ लेजिस्लेशन एटा भी करेक्ट ऑप्शन सी इन्वेस्टिगेटिंग मैटर्स ऑफ पब्लिक इंपोर्टेंस किछि सीरियस पब्लिक मैटर ऊपर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन करिवा भी कमिटी रो काम ऑप्शन सी भी करेक्ट बट ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट dismissing ministers for misconduct तो कमिटी एटा पार्लियामेंटरी कमिटी जेटा करि परिबनी ता फंक्शन अंडर रे ए जिंसटा नाही कि से मिनिस्टर्स माने को मिसकंडक्ट पे डिसमिस करि परिबो व्हाई मिनिस्टर्स को डिसमिस करिबा पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को फंक्शन प्रेरोगेटिव फंक्शन रे आसुची तो कमिटी डायरेक्टली मिनिस्टर को डिसमिस करि परिबनी तो ए बी एंड सी ऑप्शन ए इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर 11 एटू एनवायरनमेंट रो क्वेश्चन आसी गला मैंग्रोव ऊपर क्वेश्चन अछि ठीक अछि फर्स्ट क्वेश्चन हमें देखिबा कोन कहूची कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मैंग्रोव्स मैंग्रोव्स एक्ट एज नेचुरल बैरियर्स अगेंस्ट coastal erosion and tsunamis option number 2 they are salt intolerant species and thrive only in freshwater ecosystems Statement 3 Mangroves help in carbon sequestration.
and act as significant carbon sinks. Statement 1 एठी तो जणा पड़छि एटा करेक्ट स्टेटमेंट. मैंग्रोव्स कोस्टल एरिया रे ग्रो करंती आ ए सब नेचुरल बैरियर हिसाब रे भी काम करे. ठीक अछि. कोस्टल इरोजन, स्ट्रांग विंड्स हे गला, साइक्लोन, सुनामी ए सब रु भी प्रोटेक्शन दिए मैंग्रोव्स. So option statement 1 is correct. Statement 2, they are salt intolerant species. No, 8 ही भूल अछि. They are salt tolerant species and thrive only in only in fresh water नुए. Mangrove salt intolerant नुहंती. They are salt tolerant. They are salt tolerant species. Halophytes जागु कुआ जाए. Halophytes. Halophytes ହେଲା जहाँ केवल फ्रेश वाटर नुहंती. ब्राकिश वाटर हेगला एस्चुरीज, कोस्टल सलाइन एरियाज रे भी से माने ग्रो करंती केवल फ्रेश वाटर नुह. तो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट. तो स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट हेले सी एलिमिनेट हेगला, डी एंड बी एलिमिनेट हेगला, 1 एंड 3. थर्ड स्टेटमेंट भी हमें देखिबा. Mangroves carbon sequestration help in carbon sequestration and act as significant carbon sinks. Mangroves carbon sequestration रे role play करंती माने कोन? What is carbon sequestration? That they absorb huge amount of carbon dioxide from the atmosphere. आउ जेतेबेले absorb करंती ताको कुहा जाय carbon sequestration. Atmosphere रो कार्बन गला आउ से तांको भितरे से कार्बन टाको स्टोर करिकि रखिले तो ताको कार्बन सिंक भी एथि पई कुहा जाय. Right. Option A, 1 and 3 only will be correct. Question number 12. Assertion reason type ro question. First, assertion kon कहूची. Coral reefs are found only in tropical shallow waters. Reason, corals depend on symbiotic algae that require sunlight for photosynthesis. Assertion एठी correct अछि. Why? कोरल रीफ नॉर्मली से माने ट्रॉपिकल शैलो वाटर्स रे ही देखा जानती काहेकि ना ए जगह रे पानी वार्म थाए जोटा तांकर ग्रोथ पई सुइटेबल एंड इट इज वार्म एथि पई थाए काहे ना शैलो वाटर तो सनलाइट बेटर पेनिट्रेट करे, सनलाइट बेटर पहुंचे एठिकी. तो असर्शन इज करेक्ट. रीजन देखिबा, कोरल्स डिपेंड करंती सिम्बायोटिक एल्गे जाकू जूजैंथेली कहउचंदी आंको ऊपर से माने डिपेंड करंती फॉर व्हाट. ए एल्गे सनलाइट द्वारा कोन करे ना फोटोसिंथेसिस करे करके एनर्जी बनाती आउ सेटा कोरल्स को मिली थाए. सनलाइट दरकार थिबा माने एथि पई दरकार सेति पई से माने शैलो वाटर्स रे थांती. ठीक अछि. And they require sunlight for photosynthesis. So both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A. Assertion. Question number 13. Which of the following are threats to coral reef ecosystems? First hochi ocean acidification, second overfishing, third nutrient enrichment from agricultural runoff, fourth reduction in volcanic activity. First statement हमें देखिबा कहै छै ocean acidification. First of all, what is ocean acidification? Ocean acidification टा कोन? ओशन एसिडिफिकेशन को एठी देखिबे ओडिया रे कहउचंदी समुद्र अम्लीकरण. व्हाट इज ओशन एसिडिफिकेशन? जिते बळे वाटर बॉडी रे CO2 लेवल इंक्रीज हेई गले वाटर टा एसिडिक हे जाय. तो ओशन वाटर एसिडिक हेई गला परे कोरल्स रो जो कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर तांकर रहिला, जो आउटर स्केलेटन तांकर जो एक्सोस्केलेटन रहिला तो सेटा वीक हे जाय. तो ओशन एसिडिफिकेशन कोरल रीफ इकोसिस्टम पई गोटे बड़ थ्रेट. तो स्टेटमेंट ए इज करेक्ट. स्टेटमेंट बी कहिची ओवरफिशिंग उपरे. तो ओवरफिशिंग केमिति थ्रेट? कोरल रीफ इकोसिस्टम डिपेंड करंती गोटे बैलेंस्ड मरीन लाइफ उपरे. ठीक अछि. ओवरफिशिंग
मरीन फूड चेन को डिस्टर्ब करे ओवर फिशिंग हेले कोन हबो मरीन फूड चेन ऑब्वियसली सेटा डिस्टर्ब हबो तो जेहेतु कोरल रीफ इकोसिस्टम भी गोटे बैलेंस्ड मरीन लाइफ ऊपर से माने डिपेंड करंती तो मरीन रो फूड चेन एटा डिस्टर्ब हेले मरीन लाइफ डिस्टर्ब हेले कोरल हेल्थ ऊपर इंपैक्ट आसीबो तो ऑप्शन स्टेटमेंट बी भी करेक्ट स्टेटमेंट सी न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चरल रन ऑफ एग्रीकल्चरल रन ऑफ रे नाइट्रोजन हो गला फास्फोरस हो गला इन सब केमिकल्स सब जो ओशन को जाए तो आल्गी ब्लूम तार बाय प्रोडक्ट आल्गी ब्लूम हबो आल्गी ब्लूम हेले कोन हुए एक्सेस आल्गी एक्सेस माने आल्गी ब्लूम हे गले कोरल रीफ डैमेज हला तांकर इकोसिस्टम थ्रेटन हला ठीक अछि स्टेटमेंट सी भी करेक्ट अछि ये भी गोटे थ्रेट न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट फ्रॉम द एग्रीकल्चरल रन ऑफ काहेना एतरे algal bloom हुए ऑप्शन स्टेटमेंट डी इज इनकरेक्ट रिडक्शन इन वोल्केनिक एक्टिविटी आ संगे कोरल रीफ रो डिस्ट्रक्शन रो सेमती किछि डायरेक्ट यू नो रिलेशन नाही तो ऑप्शन कोन हबो A, B and C only. Question number 14. With reference to Ramsar sites in India, consider the following statements. A wetland must be designated under Montreux's record to be a Ramsar site. Statement 2. Loktak Lake and Kiolado National Park are included in the Montreux's record. Statement 3. Ramsar Convention is the only international treaty for wetlands. स्टेटमेंट 1 कहूची कि गोटे वेटलैंड को रामसर साइट डेजिग्नेटेड हबार थिले रामसर साइट हबार थिले फर्स्ट ताको मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड अंडर रे लिस्टेड हबा को पड़िबो आ एटा मैंडेटरी दिस इज मस्ट स्टेटमेंट ता भूल कना कोनोसी भी वेटलैंड को रामसर साइट बनिबा पाई मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड रे थिबा सेटा दरकार नाही मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड रे को वेटलैंड्स थांती सेटा गोटे सेपरेट लिस्ट जहां ओनली सीरियसली थ्रेटेन्ड रामसर साइट्स को रखा जाए तो स्टेटमेंट 1 एठी भूल हे गला हमें बी आउ डी एलिमिनेट कर देबा 3 इज करेक्ट तथा हमें 3 को भी डिस्कस करबा स्टेटमेंट 2 देखिबा इंडिया रो लोकतक लेक जोटा मणिपुर रे अछि मणिपुर रो लोकतक लेक आउ कियोलाडो नेशनल पार्क राजस्थान दीटा जाको मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड रे इंक्लूड अछि ठीक अछि कारण ए सब जगह ना एबे थ्रेट फेस करछन्ती तो ए माने मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड रे इंक्लूड अछन्ती स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट स्टेटमेंट 3 रामसर कन्वेंशन इज द ओनली इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर वेटलैंड्स दिस इज करेक्ट रामसर कन्वेंशन हैला वेटलैंड प्रोटेक्शन पाई वर्ल्ड रो एकमात्र डेडिकेटेड इंटरनेशनल ट्रीटी आ रामसर ए जो कन्वेंशन ए ट्रीटी केबे साइन हेतिला 1971 रे कोडी साइन हेतिला रामसर रे ईरान ठीक अछि तो ऑप्शन ए 2 and 3 only is correct 15th question consider the following statements first statement mangroves can survive both saline and freshwater conditions statement 2 all mangrove species require high oxygen content in the soil first statement ठीक अछि एटा mangroves होचंदी salt tolerant
स्पीसीज हला से माने फ्रेश वाटर एरियाज रे भी फ्रेश वाटर एरियाज रे भी से माने सर्वाइव करि परिबे आउ से माने ब्रैकिश वाटर रे भी थ्राइव करंती जहां रे सलाइन और फ्रेश वाटर मिक्स हुए तो दे कैन सर्वाइव बोथ सलाइन एंड फ्रेश वाटर कंडीशन ए ऑप्शन ए स्टेटमेंट ठीक अछि स्टेटमेंट 2 कहूची all mangrove species require high oxygen content in the soil मैंग्रोव स्पीसीज को हाई ऑक्सीजन सॉइल दरकार नहीं इनफैक्ट मैंग्रोव ग्रो करंती लो ऑक्सीजन वाटर लॉग्ड सॉइल रे वाटर लॉग्ड सॉइल रे जेउथी ऑक्सीजन लेवल लो थाए इनफैक्ट मैंग्रोव सेठी ग्रो करंती जहा पई कि तो एथिरे कोन तांकर गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपण पढिथिबे तांकर एरियल रूट्स अछि फॉर ब्रीदिंग ठीक अछि The statement 2 is incorrect that all mangrove species require high oxygen content in the soil. এটা ভুল আছে आंसर কোন হবো A 1 only question number 16 assertion reason question assertion कहूची coral reefs are referred to as the rainforest of the sea okay reason they support high biodiversity despite occupying a small portion of the ocean assertion is true here coral reefs को rainforest of sea कहा जाए कारण से माने बहुत स्पेसीज को सेठी हैबिटेट प्रोवाइड करथांती कोरल रीफ्स जो इकोसिस्टम रहिला से माने अन्य स्पीसीज को भी सेठी हैबिटेट कोन प्रोवाइड करंती हैबिटेट से माने प्रोवाइड करथांती जस्ट लाइक फॉरेस्ट जे बहुत प्रकार प्लांट्स और एनिमल्स को हैबिटेट प्रोवाइड करे कोरल रीफ्स भी एठी हैबिटेट प्रोवाइड करंती तो ताको रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी भी कहा जाए रीजन भी एठी करेक्ट अछि कोरल रीफ ओशन रो छोटो एरिया ऑक्युपाई करंती आउ से माने एठी ह्यूज बायोडायवर्सिटी को सपोर्ट करंती एठी मु कहली जे से माने हैबिटेट प्रोवाइड करंती तो एटा कोन करन बायोडायवर्सिटी को सपोर्ट करंती ठीक अछि तो एठी हमें कोन जानले कोरल रीफ्स हाई बायोडायवर्सिटी को सपोर्ट करंती हाई बायोडायवर्सिटी इन स्मॉल एरिया सेति पई कोन रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी ऑप्शन A is correct both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion question number 17 which of the following are adaptations of the mangrove species first pneumatophores for gaseous exchange salt secreting leaves prop roots for support production of buoyant seeds first statement ame देखिबा कोन कहि छी pneumatophores for gaseous exchange this is absolutely correct mangroves लो जेमती आ पूर्व मु डिस्कस कली कि से माने वाटर लॉग्ड सॉइल रे मैंग्रोव से माने ग्रो करते वाटर लॉग्ड सॉइल रे ना ऑक्सीजन रो मात्रा कम थाए तो मैंग्रोव्स लो ऑक्सीजन सॉइल रे ग्रो करती एथि पई से माने न्यूमाटोफोर्स डेवलप करती न्यूमाटोफोर्स होची याकु एरियल रूट्स भी कहती ठीक अछि तो एरियल रूट्स द्वारा ताको रेस्पिरेशन पई गैसेस एक्सचेंज हुए स्टेटमेंट ए करेक्ट अछि स्टेटमेंट बी सॉल्ट सिक्रेटिंग लीव्स भी ताकर अछि किछि मैंग्रोव स्पीसीज लीफ सॉल्ट सिक्रेट करि परंती नॉट ऑल बट किछि कर करि परंती ओ एटा ताकर गोटे अडैप्टिव फीचर जहा एक्सेस सॉल्ट बॉडी रु बाहर करे तो एक्सेस सॉल्ट बॉडी रु बाहर ले कोन हो प्लांट हेल्दी रहइबो स्टेटमेंट बी इज करेक्ट स्टेटमेंट सी prop roots for support एटा भी ताकर गोटे अडैप्टिव फीचर prop roots से माने सॉइल रे स्टेबिलिटी पई की थाए ताकर ठीक अछि आ
प्लांट को सपोर्ट करे स्पेशली जेतबेले जो वाटर लॉक्ड सॉइल टा कोन थाए सॉफ्ट मडी सॉइल रे एरिया रे से माने ग्रो करछन तो ताको सपोर्ट दरकार तो क्रॉप रूट से सपोर्ट टा दिए स्टेटमेंट सी इज करेक्ट बयान्ट सीड्स एटा भी तारो गोटे एटा भी करेक्ट अछि एडाप्टिव फीचर तारो मैंग्रोव रो बयान्ट सीड्स कोन एटा होची फ्लोटिंग सीड्स ठीक अछि एमाने कोन करंती फ्लोटिंग सीड्स प्रोड्यूस करंती जहा पानी रे फ्लोट करिवो आउ जेतबेले ठीक टाइम आसीबो सिए जर्मिनेट करिवो ऑल ऑफ द अबव सब ठीक अछि ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर 18 consider the following statements about coral reefs. Statement 1 fringing reefs grow close to the coastline. Atolls are ring shaped reefs that encircle a lagoon. Statement 3 or option 3 barrier reefs lie parallel to the shore separated by a deeper wider lagoon. 18th question. Statement 1 is करेक्ट फ्रिंजिंग रीफ जो थांती से माने कोस्टलाइन रो बिल्कुल जो क्लोजली से माने ग्रो करंती आ ये सब सबुठारु कॉमन कोरल रीफ हैला 1 इज करेक्ट 2 अटोल्स आर रिंग शेप्ड को एनुलर शेप भी कहंती दैट एनसर्कल अ लगून अटोल से माने जहां लगून रो मिडल पार्ट रे माने बेसिकली देखा जांती आ ये पूरा स्ट्रक्चर जनरली सबमर्ज्ड वोल्केनिक आइलैंड पे डेवलप हुए generally submerged volcanic island they develop हुए statement 2 is correct statement 3 barrier reefs lie parallel to the shore separated by deeper wider lagoon barrier reef coastline को parallel रे रुहंती this is correct किंतु ये सब कोस्टलाइन रू सेपरेटेड थाए ड्यू टू वाइड आउ डीप लगून स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट अछि आरो गोटे एग्जांपल होची बैरियर रीफ रो ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर एग्जांपल आंसर कोन हबो डी ऑल ऑफ द अबव उन्नीस नंबर क्वेश्चन wetlands play a critical role in water purification. This is primarily because wetland water purification रे जो critical role टा play करूची तार primary reason टा कौन first statement कहिची they contain only salt tolerant grasses एटा भूल वेटलैंड इकोसिस्टम रे केवल सॉल्ट टॉलरेंट ग्रासेस ही न थाए आहुरी भी बहुत प्रकार वेजिटेशन थांती स्टेटमेंट बी कोन कहला दे फिल्टर सेडिमेंट्स एंड अब्सॉर्ब पोल्यूटेंट्स थ्रू वेजिटेशन एंड माइक्रोबायल एक्शन एटा ठीक अछि स्टेटमेंटटा ठीक अछि सेडिमेंट वेटलैंड रो वेजिटेशन आ माइक्रोब्स जो रहिले से माने नेचुरल फिल्टर भाबरे काम करंती ठीक अछि ये सब रे सेडिमेंट फिल्ट्रेशन हे गला जो पोल्यूटेंट्स को अब्सॉर्ब करबा हे गला ये सब काम से करंती गोटे नेचुरल फिल्टर भाबरे से एक्ट करंती तो स्टेटमेंट बी इज करेक्ट स्टेटमेंट सी एटा ए दिटा तो इनकरेक्ट हे जो काना हमको आंसर मिली सरची बट स्टिल वी विल डिस्कस दे एक्सेलरेट न्यूट्रिएंट रन ऑफ इनटू वाटर बॉडीज वेटलैंड्स न्यूट्रिएंट रन ऑफ को एक्सेलरेट करंती नाही से माने न्यूट्रिएंट रन ऑफ को उल्टी रोकंती तो एटा भूल अछि दे रिमेन कंप्लीटली ड्राई ड्यूरिंग नॉन मॉनसून मंथ्स वेटलैंड्स केबे भी कंप्लीटली ड्राई रुएनी किछि वाटर रिटेंशन किछि किछि जागा रे तो सब बळे ही रहिता है
Option D is incorrect. Answer मिली सारी option B. 20th question. As per the Ramsar Convention, a wetland may include areas of Ramsar Convention अनुसारे कौन ना wetland रो गोटे बहुत ही गोटे वाइड डेफिनेशन रही wetland रो डेफिनेशन जेमती कि मरीन वाटर बॉडीज जहार डेप्थ लो टाइड टाइम रे 6 मीटर्स रु अधिका नुह जेमती कि शालो कोस्टल एरियाज हेगला तो ऑप्शन ए मरीन वाटर्स विथ डेप्थ नॉट एक्सीडिंग 6 मीटर्स एट लो टाइड एटा करेक्ट स्टेटमेंट आर्टिफिशियल रिजर्वायर्स वेटलैंड रे केवल नेचुरल नो आर्टिफिशियल रिजर्वायर्स जहां मैन मेड पॉन्ड्स हेगला टैंक्स मैन मेड पॉन्ड्स हेगला टैंक्स हेगला इवन डैम्स भी वेटलैंड रे काउंट हुए बी भी करेक्ट अछि पिटलैंड्स एंड स्वैम्प्स एटा भी करेक्ट अछि पिटलैंड स्वैम्प्स जहां मार्शी वाटर लॉग्ड लैंड कवर करथांती ए वेजिटेशन पिटलैंड और स्वैम्प वेजिटेशन ए माने जनरली वाटर लॉग्ड एरिया रे हुवंती ए माने को भी वेटलैंड डेफिनेशन रे से माने आसीबे ए सब एरिया रामसर कन्वेंशन रो वेटलैंड डेफिनेशन रे आसुची so the correct answer will be D all of the above एटी गोटे छोट जिनस मन रखिए कि रामसर कन्वेंशन रे नेचुरल आउ आर्टिफिशियल दीटा जाक वेटलैंड इंक्लूड रहिबो कोस्टल हेगला फ्रेश वाटर सॉल्ट वाटर इवन मैन मेड वाटर बॉडीज भी काउंट हुए राइट क्वेश्चन नंबर 21 consider the following statements the intertropical convergence zone ITCZ shifts north and south with the apparent movement of the sun second statement the ITCZ is associated with calm conditions and low pressure statement 1 कौन कहछि statement 1 is correct केमिति ITCZ जो रहिला ITCZ एटा सन रो apparent movement रे सन रो apparent movement रे सन केतबळे नॉर्थ हेमिस्फियर आई मीन अर्थ आउ सन भीतर जो apparent से जो डिस्टेंस टा रहिला अर्थ रो नॉर्थ हेमिस्फियर केतबळे सन रो रेस पडछि त केतबळे सदर्न हेमिस्फियर ऊपरे तो सेही हिसाब रे आईटीसीजेड रो मूवमेंट हुए ठीक अछि तो एटा दिस इज करेक्ट द आईटीसीजेड शिफ्ट्स नॉर्थ एंड साउथ विथ द apparent movement of the sun statement 2 ITCZ is associated with the calm conditions and low pressure this one is also correct ITCZ एरिया रे calm condition थाए जहा को डोल्ड्रम्स भी कहंती डोल्ड्रम्स भी कहंती एरिया रे लो प्रेशर रहउची आ लो प्रेशर रे कोन हुए विंड इटी तळ को एमती विंड कन्वर्ज हुए तापरे क्लाउड फॉर्मेशन और रेनफॉल भी हुए एटी लो प्रेशर एरिया रे so the correct answer will be कोन हबो both 1 and 2 question number 22 इटी assertion reason assertion tropical cyclones do not form near the equator reason Coriolis force is absent at the equator इक्वेटर जो रहिला जो को बेल्ट ऑफ काम बट डोल्ड्रम्स कहउचंदी 0 डिग्री एठी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एक्जेक्टली एठी फॉर्म होइनी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कोडी फॉर्म होए 5 डिग्री टू 20 डिग्री होची तारो पोजीशन टा से सेठी फॉर्म होए तो एक्जेक्टली से इक्वेटर रे तो फॉर्म हुएनी
The assertions are ठीक अछि आउ से कोथि पे फॉर्म होनी रीजन को जे Coriolis force is absent at the equator. Coriolis force केतेबेले क्रिएट हुए Coriolis force अर्थ जो रोटेट करूची Coriolis force अर्थ रो रोटेशन द्वारा जनरेट हुए आउ इक्वेटर रे Coriolis force ता एब्सेंट थाए ठीक अछि तो सेति पई इक्वेटर रे कोनोसी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्रिएट हुएनी assertion ठीक अछि और रीजन भी ठीक अछि both assertion reason are true and reason is the correct explanation of the assertion so statement option or option A is correct. Question number 23. Which of the following are characteristics of the Hadley cell? Statement A. Rising air near the equator. Statement B. Trade winds blowing towards the equator. Statement C. Subtropical high pressure belt around 30-degree latitude. Statement D. Westerlies in the mid latitudes. Statement A देखिबा कहिछि राइजिंग एयर नियर द इक्वेटर इक्वेटर पाखरे एयर राइज होउछि एयर राइज हो माने कोन तळे लो प्रेशर क्रिएट हबो इक्वेटर एरिया रे इंटेंस हीटिंग हुए इंटेंस हीटिंग होउछि इक्वेटर एरिया रे तो ए एरिया को आईटीसीजेड भी कुआ जाए आईटीसीजेड कुआ जाए लो प्रेशर एरिया एयर राइज करूची ऊपर क्लाउड फॉर्मेशन हुए आउ सब बेले सेठी रेनफॉल हुए ठीक अछि तो एटा ठीक अछि हेडली सेल पई आउ सेठी जो एयर टा राइज हुए आउ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट अराउंड 30 डिग्री लैटिट्यूड रे सेटा कन्वर्ज हुए तो सेठी जो सेल टा क्रिएट हुए ताकू हेडली सेल कहंती हेडली सेल कहंती ताकू ठीक अछि एयर राइज हुए आउ एठी जो कन्वर्ज हला ताकू हेडली सेल कहले सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट रे तो स्टेटमेंट ए करेक्ट अछि ट्रेड विंड्स ब्लोइंग टुवर्ड्स द इक्वेटर हेडली सेल रो सरफेस लेवल रे ट्रेड विंड्स इक्वेटर डायरेक्शन को ब्लो करंती ठीक अछि आउ नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स नॉर्दर्न साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स सदर्न हेमिस्फीयर ब्लो करंती आउ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ब्लो करंती गोटे सेकंड स्टेटमेंट बी भी करेक्ट अछि स्टेटमेंट सी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट अराउंड 30 डिग्री लैटिट्यूड एटा एठी हमें डिस्कस करले तो स्टेटमेंट सी भी करेक्ट अछि वेस्टर्लीज इन द मिड लैटिट्यूड्स नो दिस इज रॉन्ग वेस्टर्लीज नो वेस्टर्लीज मिड लैटिट्यूड मिड लैटिट्यूड रे किंतु सेटा हैडली सेल नो से माने मिड लैटिट्यूड रे थांती एटा करेक्ट अछि किंतु एने हैडली सेल रो गोटे कैरेक्टरिस्टिक से माने नोंती वेस्टर्लीज कहार कैरेक्टरिस्टिक्स से होचंदी फेरल सेल रो पार्ट तो आर आंसर कौन हबो आंसर विल बी ए बी एंड सी ओनली A, B and C only. Option number A. Question number 24. Consider the following about jet streams. Jet streams are fast moving air currents in the upper troposphere. Statement 1 goes. Statement 2. They influence the movement of the western disturbances in India. Statement 3. Subtropical jet streams weaken during the Indian monsoon. So statement 1 is correct. जेट स्ट्रीम अपर ट्रोपोस्फियर रे देखा जाती जहां फास्ट मूविंग नैरो एयर करेंट्स हला से माने मेनली वेस्ट टू ईस्ट ब्लो करंदी वेस्ट टू ईस्ट होची तांकर डायरेक्शन सेथि पई तांको कोन कहै छै तांको वेस्टर्लीज कहै छै दे इन्फ्लुएंस द मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इन इंडिया दिस वन इज आल्सो करेक्ट इंडिया रे विंटर सीजन टाइम रे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम इन्फ्लुएंस करंती सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स इन्फ्लुएंस करंती तो आप रे कोन हुए ना नॉर्थ इंडिया रे रेनफॉल हुए
एटा भी करेक्ट अछि. Statement 3, subtropical jet streams weaken during the Indian monsoon. Indian monsoon time रे subtropical jet streams weak हुए. ଆଉ ए टाइम रे ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स डोमिनेट करंती. ठीक अछि. ट्रॉपिकल jet streams dominate during this time. तो कोटा ठीक हम. Option number D, 1, 2, 3. All the 3 options are correct. All the 3 statements are correct. Sorry. Question number 25. Arrange the following atmospheric cells from the equator to the pole. एटा इक्वेटर हेगला. Subtropical high pressure belt, subtropical low pressure belt, polar high. ठीक अछि. 20 एटार आंसर हबो बी. ए सी बी केमती मु कहूची. हैडली सेल होची एठी इक्वेटर रु 30 डिग्री लैटिट्यूड जाए एठी जो सेल टा फॉर्म होबो एठी एयर एठी राइज करिकी एठी डिसेंड करिवो एठी जो सेल टा फॉर्म होची सेटा होची हैडली सेल. एठी एयर टा एठी फॉल करूची एठू पुणी कोन करिवो सेठी की जिवो एठी एठी जो सेल टा फॉर्म होबो ताकू कहउचंदी 30 to 60 डिग्री लैटिट्यूड रा फेरल सेल. आउ 60 डिग्री लैटिट्यूड रु एठी पोल पाख जाए एटा होची पोलर सेल. तो हैडली सेल कोन हेगला 0 रु 30 डिग्री 30 to 60 होची फेरल 60 रु 90 is polar. तो फर्स्ट कोन आसिला फर्स्ट आसिला हैडली तापर सेकंड आसिला फेरल थर्ड आसिला पोलर. ऑप्शन नंबर बी. Question number 26. The nor'easter is a storm system associated with which of the following region? एटा गोटे factual question. एटी कहिछि nor'easter टा जो गोटे storm system अछि एटा को region संगे से particularly associated. एटा हबो ऑप्शन नंबर बी ईस्ट कोस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स. ठीक अछि. नॉर्'ईस्टर्स हैला लो प्रेशर स्टॉर्म सिस्टम. एटा गोटे कोन एटा गोटे लो प्रेशर स्टॉर्म सिस्टम जहां मेनली ईस्ट कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स रे एटा देखा जाए स्पेशली को टाइम रे स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स. ठीक अछि. Question number 27. At approximately which latitude does the feral cell operate? आमे ऊपरे भी डिस्कस करथिले 0 to 30 होची को सेल हैडली सेल 30 to 60 डिग्री लैटिट्यूड जाए कि ऑपरेट करे फेरल सेल और 60 to 90 डिग्री पोलर सेल. फेरल सेल ताले एटी ऑप्शन कोन हबो 30 to 60 डिग्री. ऑप्शन नंबर बी. Question number 28. Why does land heat up and cool down faster than water? Question एटी कहिछि कि land water body ठारू जल्दी warm आउ cool down कोन पई हुए. Statement A. Land has lower specific heat capacity than water. Okay. First एठी बुझिबा what is specific heat? Specific heat capacity टा कोन?
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी माने कौन सी सब्सटेंस को 1 डिग्री सेंटीग्रेड हीट करबा को केते एनर्जी दरकार केते एनर्जी दरकार ताकू कहती से सब्सटेंस रो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लैंड रो स्पेसिफिक हीट वाटर रो कंपैरिजन रे कम तो लैंड तो से कौन हम से जल्दी हीट अप हम आ जल्दी कूल डाउन भी हम वाटर रो कंपैरिजन रे वाटर रो हीट आउ हीट अब्जॉर्प्शन आउ रिलीज रो प्रोसेस टा स्लो ठीक अछि तो ये हीट अप और कूल डाउन डेरी रे हुए तो आंसर आरो कोन हबो करेक्ट आंसर विल बी ए लैंड हैज लोअर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देन वाटर क्वेश्चन नंबर 29 डिस्कस करबा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एयर masses okay Statement 1 An air mass acquires the characteristic of the surface over which it forms. Statement 2 Maritime tropical air mass is associated with cold and dry weather. First of all, हमें ये देखिबा कि एयर मास कौन एयर मास जेकोसी से धर लैंड ऊपर फॉर्म कला कि धर मरीन वाटर बॉडी ऊपर फॉर्म कला एयर मास रो कैरेक्टरिस्टिक कोन ना से सेही पर्टिकुलर जगार कैरेक्टरिस्टिक को अडॉप्ट करिवो ठीक अछि एयर मास सरफेस कैरेक्टरिस्टिक को सब बेले अडॉप्ट करे जहां ऊपर से फॉर्म होता है तो स्टेटमेंट 1 एठी करेक्ट अछि कोन पई एयर मास जहाँ सरफेस रे एयर मास फॉर्म हुए से सरफेस रो टेम्परेचर और मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक को से acquire करिनी एठी मु कहली an air mass acquires the characteristic of the surface over which it forms the statement 1 correct अछि statement 2 कोन अछि statement 2 एठी incorrect कोन कहै छै maritime tropical air mass is associated with cold and dry weather मु एठी explain कली कि air mass जो बॉडी ऊपर फॉर्म हुए से तार टेम्परेचर तार कैरेक्टरिस्टिक को से अडॉप्ट करे तो मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास वार्म एंड ह्यूमिड वेदर को ब्रिंग करे एटा कोल्ड आउ ड्राई नो वार्म एंड ह्यूमिड हबो काहेकि ना एटा ओशन सरफेस ऊपर फॉर्म होजे तो एटा कोल्ड आउ ड्राई वेदर संगे तो एसोसिएटेड नो एटा वार्म आउ ह्यूमिड वेदर संगे एसोसिएटेड तर आंसर कोन हबो आंसर विल बी 1 only option number A question number 30 with reference to La Nina consider the following statements statement 1 it causes stronger trade winds in the Pacific Ocean statement 2 it typically brings above average monsoon rainfall in India Statement 3, it leads to warming of the equatorial Pacific waters. Statement 1, आमे देखिबा ला नीना टाइम रे पैसिफिक ओशियन रे ट्रेड विंड्स स्ट्रॉन्गर थाए ला नीना टाइम रे कोन होई थाए पैसिफिक ओशियन रे ट्रेड विंड स्ट्रॉन्ग थाए तो ऑप्शन 1 जहा ईस्टर्न पैसिफिक रो वार्म वाटर वेस्टर्न पैसिफिक को सेत्रे कोन होई कि ईस्टर्न पैसिफिक रो वार्म वाटर वेस्टर्न पैसिफिक को से कोन करे ना पुश करे ठीक अछि तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट अछि स्टेटमेंट 2 इट टिपिकली ब्रिंग्स अबव एवरेज मॉनसून रेनफॉल इन इंडिया ला नीना इंडिया रे जनरली अबव एवरेज मॉनसून रेनफॉल को प्रमोट करे एटा करेक्ट अछि स्पेशली एटा कोडी करे सेंट्रल आ नॉर्थ वेस्ट इंडिया रे एटा प्रमोट करे स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट अछि स्टेटमेंट 3 इट लीड्स टू वार्मिंग ऑफ द इक्वेटोरियल पैसिफिक वाटर्स ला नीना टाइम रे इक्वेटोरियल पैसिफिक वाटर कूल हुए एठी कोन कहै छै एठी वार्मिंग कहै छै एठी हुए कोन एटा कूल डाउन हुए और कूलिंग हुए एठी वार्मिंग नुह वार्मिंग केते बळे हबो एल नीनो टाइम रे
तो एठी से कौन कला इनफॉरमेशन को इंटरचेंज कर दिया जाइए एटा रॉन्ग हबो ऑप्शन कौन हबो ऑप्शन एठी देखियो गले कौन है ऑप्शन ए 1 and 2 ऑप्शन 1 and ऑप्शन 2 क्वेश्चन नंबर 31 with reference to early European trading companies in India, consider the following statements. First statement, the Dutch primarily focused on spice trade and established their main base at Pulicat on the Coromandel coast. डच लोक माने मुख्यतः मसला वाणिज्य उपरे ध्यान देइथिले एवं करमंडल उपकूल रे पुलिकाट रे सेमानकर मुख्य आधार स्थापन करथिले स्टेटमेंट 180 ठीक अछि तांकर डच लोक मानकर तांकर कोन थिला डच मानकर तांकर प्राइमरीली से माने मेनली फोकस करथिले स्पाइस ट्रेड ऊपर से फोकस करथिले आ तांकर फर्स्ट मेजर बेस भी पुलिकत रे ही थिला कोरोमंडल कोस्ट रे एस्टैब्लिश हेतला तो एटा करेक्ट अछि स्टेटमेंटा The Danes established a settlement at Tranquebar and later sold their Indian possessions to the British. डेन्स जो माने थिले से माने ट्रांक्वेबार रे सेटलमेंट एस्टैब्लिश करथिले एटा पूरा ठीक अछि आ लेटर से कोन करथिले तांकर जते भी सब सेटलमेंट्स थिला पोजीशन थिला सेटलमेंट थिला से माने ब्रिटिशर्स माने को से माने बिकी देकी पळैथिले स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट अछि Statement 3. The English East India Company received a royal charter from the Queen Elizabeth I granting it monopoly over the trade with the East Indies. इंग्राजी ईस्ट इंडिया कंपनी रानी एलिजाबेथ प्रथम ठारू एक राजकीय सनंद पाइथिले जहा एहाकु पूर्व इंडीज सहित वाणिज्य उपरे एकाधिकार प्रदान करिथिला ए स्टेटमेंट भी ठीक अछि 1600 रे कोन हितला एटा केबे हितला 1600 रे हितला 1600 रे क्वीन एलिजाबेथ 1 कोन करथिले इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ईआईसी को कोन करथिले गोटे रॉयल चार्टर देथिले रॉयल चार्टर ग्रांट करथिले जो फल रे ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स मिलिथिला ट्रेड करबा पई तो ऑप्शन कोटा ठीक हबो डी 1 2 3 ऑप्शन डी 1 2 3 इज करेक्ट 32nd question. Assertion: the Danes could not establish a stronghold in India. Reason: they lacked naval superiority and had limited commercial interest compared to other European powers. Assertion एठी ट्रू अछि कोन पई डेन्स कोन हितला जो डेनमार्क रो जो माने आसीथिले से माने इंडिया रे गोटे तांकर गोटे स्ट्रांग फुटहोल्ड से माने एस्टैब्लिश करि पारिलेनी तांकर प्रेजेंस मेनली ट्रांक्वेबार आउ सेरामपुर रे थिला आउ सेरामपुर जाय ही सेटा सेति जे लिमिटेड थिला सेति जाय लिमिटेड थिला आउ तांकु परे ही से कोन कले एस्टैब्लिशमेंट गुडा को ब्रिटिशर्स माने को सेल कर देकी से पळेले Assertion ठीक अछि रीजन डेन्स मानक पाखरे नेवल सुपीरियरिटी नथिला जोटा कि ब्रिटिशर्स मानक पाखरे थिला जो फल रे नेवल सुपीरियरिटी का पाखरे थिला ब्रिटिशर्स मानक पाखरे थिला जो फल रे से माने इंडिया रे गोटे स्ट्रांग होल्ड से एस्टैब्लिश कर परथिले ठीक अछि तांको पाखरे कोन था नेवल सुपीरियरिटी नथिला तांकर कमर्शियल इंटरेस्ट भी जेमति कि ब्रिटिशर्स हेई गले डच हेई गले पोर्टुगीज हेई गले तांको कंपैरिजन रे भी कम थिला तांकर कमर्शियल इंटरेस्ट भी सो द करेक्ट आंसर विल बी ए both assertion and reason are true and R is the correct explanation of A. Question number 33. Which of the following are true about the English East India Company? Statement 1. It was a private trading company. Statement 2. It had monopoly rights granted by Royal Charter. Statement 3. It was administered directly by the British. Statement thibo eti British Crown from the beginning.
Statement number 4, it established first factory at Surat. Factual question eta. It was a private trading company. এটা পুরা ঠিক ଅଛି ଏ statement. English East India Company କଣ ଥିଲା? ଗୋଟେ private trading company ଥିଲା. Government directly ତାକୁ run କରୁନଥିଲା. Crown directly ତାକୁ run କରୁନଥିଲା. ଠିକ ଅଛି ତ statement A correct ଅଛି. It had monopoly right granted by a royal charter. This is true. Queen Elizabeth I ଦ୍ୱାରା royal charter grant ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ East Indies ରେ trade କରିବା ପାଇଁ. କୋଉଠି trade କରିବା ପାଇଁ? East Indies ରେ trade କରିବା ପାଇଁ. ତାଙ୍କୁ monopoly ମିଳିଥିଲା. Statement C, it was administered directly by the British Crown. ନାଇଁ. From the beginning. ଏଠି ଯୋଉ କହିଦେଲା ନା from the beginning. ଏଇଠି ଭୁଲ ହେଇଗଲା. Beginning ରୁ British Crown ସେଟା ଗୋଟେ ଏଠି କଣ ହେଇଥିଲା? ଗୋଟେ private trading company ସେ ଥିଲା. ସେ directly Crown ଦ୍ୱାରା administer ତାକୁ କରାଯାଉ ନଥିଲା. ଠିକ ଅଛି. ଏଇଟା British Crown କେତେବେଳେ? British Crown ଯୋଉ ଥିଲା British Crown କେତେବେଳେ direct control ନେଲା? 1857 ରେ ଯେତେବେଳେ war ହେଲା ତାପରେ 1858 ରେ British Crown directly administer କରିବା ତାକୁ start କଲା. ଠିକ ଅଛି. Option number D, it established first factory at Surat. ଠିକ ଅଛି ଏଟା factual କେବେ ହେଇଥିଲା? 1608 ରେ ହେଇଥିଲା. ତ answer କଣ ହବ? Answer will be A. A, B and D only. Option number A. Question number 34. Consider the following. The English founded Fort St. George in Madras. Statement number 2. The Dutch lost their last Indian settlement to British in 1825. Statement number 3. The Danes traded in India for more than 300 years. Okay. Statement 1, this is correct. English East India Company 1639 रे मद्रास रे से कौन करथिले? They founded the Fort St. George. Establish से करथिले और सेटा तांकर important base थिला. एटा ना गोटे important base थिला तांकर. Second statement भी correct अछि. Dutch माने को last Indian settlement से माने 1825 रे Britishers माने को से माने sell कर दे कि गले. तापरे Dutch मानकर presence बहुत माने कहबो गले end ही हे गला तापरे. ठीक अछि. Statement 3. The Danes traded in India for more than 300 years. Look at this fact. For more than 300 years. नाइ एटा भूल. से माने 300 years रो अधिका नुए. एटा around 200 to 250 एमती मन रखि परिबे. To be precise 225 years around से माने trade करतले. एटी ए fact ता भूल अछि. 300 years नुए. The 3 statement 3 is wrong. Answer will be A. 1 and 2 only. Question number 35. Arrange the following events in chronological order. Chronological order, factual question. एठी केतबळे को इवेंट ता हेतला एठी year by year मने रखि देबे आकु. First होची foundation of Fort William. Foundation of Fort William केबे हेतला एठी? एटा हेतला 1696 रे. कोठी हेतला? Calcutta. Present day रे कोलकाता. Establishment of English East India Company. एटा तो बहुत basic. 1600 रे. Statement 3. Battle of Swali. Battle of Swali हेतला 1612. एटा कहा भीतर ये battle डा हेतला? एटा गोटे बहुत important battle हैला. एटा जोटी की near एटा सूरत हेतला. Near सूरत. कहा भीतर हेतला? English and Portuguese.
आंको भितर हेतला विक्टोरियस के हेतला एतरे इंग्लिश विक्टोरियस हेतले ओके बैटल ऑफ स्वाली गला एस्टाब्लिशमेंट ऑफ डच ईस्ट इंडिया कंपनी के हेतला 1602 द करेक्ट आंसर कोन हबो ए B D A C it will be the chronology. Question number 36. The Danish East India Company established its main base at Danish East India Company तांकर main base टा कोड थिला ट्रांक्विबार रे थिला ट्रांक्विबार ठीक अछि जहा कि प्रेजेंट डे तमिलनाडु एटी प्रेजेंट डे एटा कोड हेटा लोकेटेड एटा तमिलनाडु कोस्ट रे लोकेटेड तमिलनाडु कोस्ट रे एटा लोकेटेड ठीक अछि ट्रांक्विबार रे 1620 रे तांकर इंपोर्टेंट फोर्ट गोटे थिला फोर्ट डांसबर्ग मन रखिबे फोर्ट डांसबर्ग एटी से माने ट्रेड ऑपरेशंस भी करूथिले तो आंसर कोन हबो सी Question number 37. In which year was the English East India Company granted Diwani rights of Bengal, Bihar and Odisha? पूरा factual question एटा को year रे हितला एटा 1765 1765 रे कोन हैला particularly आउट या details रे देखिले मुगल एम्परर सेतबेले किए थिले मुगल एम्परर शाह आलम II शाह आलम सेकंड शाह आलम II ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स से मेरे से देइथिले ईस्ट इंडिया कंपनी को से दीवानी राइट्स से देइथिले ठीक अछि दीवानी राइट्स कोन व्हाट इज दीवानी राइट्स टैक्स कलेक्शन और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन रो अधिकार बेंगल बिहार और ओडिसा रो टैक्स कलेक्शन टैक्स और रेवेन्यू रो दायित्व ए तीनटा जगह बेंगल बिहार और ओडिसा रो 1765 रे शाह आलम II ईस्ट इंडिया कंपनी को देइथिले Correct answer 1765. Question number 38. What was the key factor that enabled the English to eventually outlast the Dutch in India? Very easy. ऊपर भी बहुत जगह डिस्कस हे सलानी कि डच मानको पाखरे स्ट्रांग मिलिटरी प्रेजेंस की नेवल पावर नथला सेटा इंग्लिश मानको ईस्ट इंडिया कंपनी पाखरे थिला तो से माने गोटे स्ट्रांग होल्ड एस्टैब्लिश करि पारथिले तर आंसर कोन हबो Option number B, strong military presence and naval power. Question number 39. Assertion. The Battle of Swali was a turning point in the Anglo-Portuguese rivalry in India. Other reason kohichi, it established British naval supremacy on the western coast of India. 39th question. Assertion. एटा पूरा ट्रू अछि बैटल ऑफ स्वाली इटी ऊपर भी गोटे क्वेश्चन रे हमें ब्रीफली डिस्कस करथिले 1612 रे हितला 1612 रे कोन हितला बैटल ऑफ स्वाली नियर सूरत इंग्लिश और पोर्टुगीज मानको मध्य रे नेवल बैटलटा हैला ए बैटल रे परे पोर्टुगीज डोमिनेंस कोन हैला धीरे धीरे डिक्लाइन होबा स्टार्ट हैला तो एटा कोन हैला फर्दर ईस्ट इंडिया कंपनी को स्ट्रेंथन करिवारे एटा हेल्प कला तो assertion राइट अछि आर रीजन कोन कहिछि इट एस्टैब्लिश्ड ब्रिटिश नेवल सुप्रीमेसी ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया करेक्ट ए बैटल पर ब्रिटिश मानकर कोन वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया रे तांकर सुपीरियरिटी आहुरी प्रमोट हैला जहा से राइवलरी रो कोन थिला आर गोटे टर्निंग पॉइंट थिला काइना पोर्टुगीज डिक्लाइन करिवा स्टार्ट हे गेले तो एटा कोन हबो ऑप्शन नंबर ए will be correct. Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion. Question number 40. With reference to the Dutch in India, consider the following statements. Statement 1, they were defeated by the Marathas in the Battle of Bhopal. Statement 2, their commercial interests were centered around spices and textiles. Statement 3, kon kochi, they lost control of Cochin to the British in 1795. Statement 1 kon kaila Statement 1 ta iti 40 number question ro eta iti incorrect achi. Battle of Bhopal iti tike dekhiba Battle of Bhopal ta kebe hitla
1737 रे हितला मन रखिबे बैटल ऑफ भोपाल मराठा आ मुगल एम्पायर मध्य रे ए बैटल डा हेतिला मराठा एंड मुगल्स तो डच मानकर क्लियरली एठी देखा जाउछ कि जो बैटल आंको भीतर हेतला तो आंकर सेमती किछि क्लियर रोल नथिला तो स्टेटमेंट 1 टाइटी इनकरेक्ट हे जाउछ स्टेटमेंट 2 देयर कमर्शियल इंटरेस्ट वर सेंटर्ड अराउंड स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल्स दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट डच मानकर कमर्शियल इंटरेस्ट स्पाइस ट्रेड रे थिला स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया रे थिला आ इंडिया रे तांकर टेक्सटाइल इंडिया रे टेक्सटाइल ट्रेड भी इम्पोर्टेंट थिला टेक्सटाइल ट्रेड इम्पोर्टेंट थिला स्टेटमेंट नंबर 3 1795 रे डच दे लॉस्ट कंट्रोल ऑफ कोचिन टू द ब्रिटिश दिस इज करेक्ट लास्ट रे तो डच माने से माने तांकर सब जगह सेटलमेंट ब्रिटिश को सेल कर देकी पळेले दिस इज करेक्ट आ डच रे प्रेजेंस तापरे माने ऑलमोस्ट एंड ही गला ए ईयर परे तो 40th क्वेश्चन रो आंसर कोन हबो आंसर विल बी ए 213 is correct option number A. Question number 41. A recent study, current affairs question, on rice plants revealed a surprising ability to adapt to cold through non-genetic means. Consider the following statements. First statement कहिछि the gene ACT1 in rice is responsible for producing a protein that helps the plant tolerate cold temperature. Statement पूरा ठीक अछि ACT1 ए जीन टा प्रोटीन प्रोड्यूस करे राइस प्लांट रे तो राइस प्लांट रे प्रोटीन प्रोड्यूस करे ताको को स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक दिए से कोल्ड टॉलरेंस करिबारे भी हेल्प करे तो दैट हेल्प द प्लांट टॉलरेट द कोल्ड टेम्परेचर एटा ठीक अछि स्टेटमेंट नंबर 2 द adaptation was made possible through an epigenetic modification not by a change in the DNA sequence ओके तो एठी ए एडाप्टेशन टा ए जो कोल्ड टेम्परेचर सहीबार जो एडाप्टेशन टा ए राइस प्लांट को मिलिला तो एटा ए ऑप्शन ए स्टेटमेंट रे कहिछि कि एटा गोटे एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन ए एडाप्टेशन एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन द्वारा हैला माने डीएनए सीक्वेंस रे किछि चेंज हैला नै डीएनए सीक्वेंस रे किछि चेंज हैला नै किंतु डीएनए रो एटी गोटे नोट करिवे डीएनए रो सीक्वेंस रे किछि चेंज हैला नै किंतु डीएनए रो एक्सप्रेशन रे चेंज हैला तो एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन रे कोन हुए डीएनए सीक्वेंस रे किछि चेंजेस आसेनी डीएनए रो एक्सप्रेशन रे चेंज आसे स्टेटमेंट करेक्ट अछि Statement 3 कहिछि these epigenetic changes were found to be heritable for at least 5 generations. This is correct. Research रे देखा जाए कि ये epigenetic changes कम से कम 5 generation जाए तो inherit होछ. Statement number 3 ठीक अछि. Statement number 4 the study supports the classical Darwinian model of evolution based solely on natural selection. एटा भूल अछि स्टेटमेंट टा ए स्टडी प्योरली क्लासिकल डार्विनियन नेचुरल सिलेक्शन मॉडल को सपोर्ट करूनी कहीं ना डार्विनियन मॉडल रे ना जीन लेवल म्यूटेशन हुए जीन लेवल रे चेंजेस आसे किंतु एपिजेनेटिक एठी कोन होची एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन होची एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन रे डीएनए सीक्वेंस रे किछि चेंज हुएनी एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन कोन देखले डीएनए सीक्वेंस रे चेंज हुएनी आसे नाही डीएनए सीक्वेंस रे किसी चेंज आसे नाही जीन एक्सप्रेशन चेंज हला एठी तो आंसर कोन हबो आंसर होची 1 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए
Question number 42. With reference to the India-France joint military exercise Shakti 2025, consider the following statements. Statement number 1. The 2025 edition of exercise Shakti is the 8th in the series and is being held in India. Statement 1 ta incorrect ଅଛି. 2025 edition 8th edition जोटा एटा तो करेक्ट अछि कि एटा 8th edition किंतु एटा इंडिया रे नुहे एटा फ्रांस रे हेल्ड माने हेछि. तो स्टेटमेंट 1 टा इनकरेक्ट. स्टेटमेंट 2 इंडिया साइड रू जम्मू कश्मीर राइफल्स आ फ्रेंच साइड रू 13th फॉरेन लीजियन हाफ ब्रिगेड ए माने पार्टिसिपेट करछंदी. एटा ठीक इंफॉर्मेशन. Statement number 3. Exercise Shakti is an annual bilaterally military exercise focusing on maritime security cooperation. Nahi, eta incorrect. Exercise Shakti annual nuhe, eta biennial exercise. Eta annual nuhe, eta hoji biennial. Eta hoji biennial exercise. ଆଉ maritime security ऊपर नुहे, एटा land based operation ऊपर focus करे. Maritime security नुहे, land based operations. Land based operations ऊपर फोकस करे. स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट अछि. आंसर कोन हबो? आंसर ए 2 ओनली. आंसर कोन हबो? इटी ऑप्शन नंबर ए. Question number 43. Which of the following best describes the term book buildings in the context of initial public offerings, IPO? First statement, a mechanism to determine the price of shares based on investor bids. Eta correct hegala to automatically ei tinta option eliminate hegala, but still we will discuss all the 4 options. 43 रे कोन होची? Explanation आर कोन? Book building. बुक बिल्डिंग माने हेला आईपीओ जेतोले कंपनी ताकर आईपीओ इश्यू करंदी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स तो से समय रे शेयर प्राइस डायरेक्टली फिक्स करा जाय नै. जो शेयर प्राइस रहला सेउडा डायरेक्टली फिक्स करा जाय नै. डायरेक्टली फिक्स करा जाय नै. इन्वेस्टर्स मानक बिड बेसिस रे प्राइस डिसाइड करा जाय. ठीक अछि. इन्वेस्टर मानकर जो बिड बेसिस रे एठी प्राइस टा डिसाइड हुए. A system of fixed pricing of shares by SEBI. Nahi, eta incorrect statement. Issuance of shares to employees under ESOP. Incorrect. Accounting process of recording IPO transactions. Eta bhi incorrect achi. Question number 44. Which of the following pairs of radar types and their applications are correctly matched? चारटा रैडर अच्छी सिंथेटिक अपर्चर रैडर, डॉपलर रैडर, फेज्ड अरे रैडर, ओवर द होराइजन रैडर. आंको भितरु को रैडर टाइप रो तांको एप्लीकेशन संगे मैचिंग टा ठीक अच्छे. फर्स्ट सिंथेटिक अपर्चर रैडर ये कही छी हाई रेजोल्यूशन अर्थ इमेजिंग थ्रू क्लाउड्स. सिंथेटिक अपर्चर रैडर रो काम कोन कि हाई रेजोल्यूशन अर्थ इमेजिंग पाई एटा यूज हुए. स्पेशली जहाँ क्लाउड कवर करी थाए ता थ्रू रु भी ये इमेजिंग प्रोसेस टा तारा करी परिबो. इमेजिंग संभव करे. रिमोट सेंसिंग मिशन रे स्पेशली रिमोट सेंसिंग मिशन जेतबळे थाए रिमोट सेंसिंग मिशंस रे एटा बहुत हेल्पफुल सिंथेटिक अपर्चर रैडर. ए मैचिंग टा ठीक अच्छे. डॉपलर रैडर स्पीड डिटेक्शन यूजिंग फ्रीक्वेंसी शिफ्ट. डॉपलर रैडर रे फ्रीक्वेंसी शिफ्ट बेसिस रे स्पीड डिटेक्ट करा जाय. स्पेशली एटा केतेबळे एटा हेल्पफुल वेदर फोरकास्टिंग रे. वेदर फोरकास्टिंग आ ट्रैफिक स्पीड डिटेक्शन रे भी एटा यूज हुए. ट्रैफिक स्पीड डिटेक्शन
रे भी एटा यूज हुए एटा भी करेक्ट अछि फेज्ड array radar imaging of the planetary surfaces एटा इनकरेक्ट अछि फेज्ड array radar planetary imaging पय डायरेक्टली यूज एटा हुएनी एटा फास्ट बीम स्टीयरिंग पय यूज हुए फास्ट बीम स्टीयरिंग फास्ट बीम स्टीयरिंग पय यूज हुए एयर डिफेंस मिसाइल डिटेक्शन पय भी एटा यूज हुए एयर डिफेंस हे गला मिसाइल डिटेक्शन हे गला एगुडा होछि ताकर सब एप्लीकेशन तो एप्लीकेशन भी टिके टिके मन रखिथिबे तो एटा कोन हैला एटा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हे गला फोर्थ होछि ओवर द होराइजन radar OTH डिटेक्शन ऑफ टारगेट्स बियॉन्ड द लाइन ऑफ साइट करेक्ट ओवर द OTH यूज हुए लाइन ऑफ साइट बाहर जो टारगेट डिटेक्ट करिया को लाइन ऑफ साइट बाहर जो भी टारगेट्स रही गले ताको डिटेक्ट करिया मिसाइल हे गला कि कोन हे गला तो ताको टारगेट्स डिटेक्ट करिया को एटा यूज हुए ओशन मॉनिटरिंग हे गला मिसाइल डिटेक्शन पय एटा हेल्पफुल आर भी मिसाइल डिटेक्शन गोटे एप्लीकेशन जीवो आ गोटे कोन कहली एबे मु ओशन मॉनिटरिंग तो ऑप्शन 3 ही खाली भूल अछि तो 1 to 4 only option number A will be correct 1 to 4 question number 45 which of the following are key objectives of the revised green India mission ठीक है जी फर्स्ट स्टेटमेंट improving the hydrological services second statement creating additional carbon sink third statement promoting blue hydrogen productions fourth statement enhancing income for forest dependent communities first statement ठीक अछि improving hydrological services green india mission रे hydrological service जेमति कि वाटर साइकिल इंप्रूव करिवा हो कि वाटर अवेलेबिलिटी बढ़ाइबा हो तांकर अवेलेबिलिटी कहार वाटर रो बढ़ाइबा भी तांकर ऑब्जेक्टिव तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट अछि स्टेटमेंट 2 क्रिएटिंग एडिशनल कार्बन सिंक एटा भी पूरा ठीक कार्बन सिंक क्रिएट करिवा माने ट्री प्लांटेशन आउ फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करिवा एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड इठी कोन हबो ए माने एज अ कार्बन सिंक एक्ट कले एटमॉस्फेयर जो एडिशनल कार्बन डाइऑक्साइड रहिला जो हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड जोटा हार्म प्रोड्यूस करिवो तो सेटा को से माने अब्सॉर्ब करि नेबे तो एटा भी रिवाइज्ड ग्रीन इंडिया मिशन रो गोटे गोल ऑब्जेक्टिव एटा भी ठीक अछि स्टेटमेंट 3 प्रमोटिंग ब्लू हाइड्रोजन प्रोडक्शन दिस वन इज इनकरेक्ट ब्लू हाइड्रोजन प्रोडक्शन ग्रीन इंडिया मिशन सांगरे सेटा रिलेटेड नुहे एटा एनर्जी सेक्टर ऑफ हाइड्रोजन पॉलिसी रे बेसिकली कवर हुए एनर्जी सेक्टर रे बेसिकली कवर हुए तो स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग स्टेटमेंट 3 एलिमिनेट कले कटि जाउची स्टेटमेंट 4 ऑटोमेटिकली ठीक हे जाउची बट एनहांसिंग इनकम फॉर फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज वेरी जेनेरिक स्टेटमेंट फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज रो इनकम एनहांस करिया भी ग्रीन इंडिया मिशन रो इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव रे अछि एटा ठीक अछि आंसर कोन हबो बी 1 to 4 only question number 46 in the context of nuclear energy which of the following statement is or are correct first statement heavy water reactors allow online refueling without shutdown एटा ठीक अछि हेवी वाटर रिएक्टर्स कोन करे ऑनलाइन रिफिलिंग पॉसिबल माने हैला प्लांट जेतबेले बंद थिबो प्लांट जेतबेले शटडाउन थिबो तो सेतबेले भी एटा पॉसिबल तो माने प्लांट शटडाउन करी बा न करी फ्यूल ता चेंज करा जाई परिबो एटा तो कोन हैला एटा वन ऑफ द एडवांटेजेस हेगला एटा ठीक अछि स्टेटमेंट 2 दे हैव हायर प्रोलिफरेशन रिस्क ड्यू टू प्लूटोनियम प्रोडक्शन हेवी वाटर रिएक्टर्स रे कोन होउची प्लूटोनियम प्रोडक्शन हैला जहा न्यूक्लियर वेपन्स बनिबा पॉसिबिलिटी टा को बढ़ाउची न्यूक्लियर वेपन्स रो पॉसिबिलिटी इंक्रीज होउची तो कोन एथरे होउची हायर प्रोलिफरेशन रिस्क रहउची हायर प्रोलिफरेशन रो रिस्क रहउची
थ्रेट अच्छी तो यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट 1 करेक्ट है गला 2 करेक्ट है गला देन स्टेटमेंट नंबर 3 को जीवा दे रिक्वायर एनरिच्ड यूरेनियम फॉर एफिशिएंट ऑपरेशन एटा इनकरेक्ट अच्छी हेवी वाटर रिएक्टर्स कौन करती हेवी वाटर रिएक्टर्स जो रही गले एनरिच्ड यूरेनियम सेतिपाई दरकार नाही मोस्टली नेचुरल यूरेनियम रे भी एफिशिएंटली माने नेचुरल यूरेनियम रे भी एफिशिएंट माने रही परिवे एफिशिएंट रही परिवे कौन अब ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 only with reference to green hydrogen in India consider the following statement 1 green hydrogen is currently cheaper than the grey hydrogen एटा स्टेटमेंट एटा भूल अछि ग्रीन हाइड्रोजन एबे ग्रे हाइड्रोजन तुलन रे एटा चीप नुह सस्ता नुह ग्रे हाइड्रोजन ठारू ग्रीन हाइड्रोजन एटा कॉस्टलियर तो एटा स्टेटमेंट भूल अछि स्टेटमेंट 2 India has launched the National Green Hydrogen Mission with target of 5 million metric tons by 2030 एटा करेक्ट अछि इंडिया 2023 रे जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च करिछि ए मिशन रे टार्गेट हैला 2030 पर्यंत मिनिमम 5 mmT ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करिबा तो एई स्टेटमेंट ठीक अछि स्टेटमेंट 3 एक्सपोर्ट demand is currently strong due to global policy stability एटा रॉन्ग एक्सपोर्ट डिमांड बहुत स्ट्रांग नुए पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर आर पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर एबे भी डेवलप होची किछि कंट्रीज कर से माने इंटरेस्ट देखै चंती बट एटा एते भी स्ट्रांगली एबे डिमांड रे नाही एते भी डिमांड आर स्ट्रांग नाही बट एटा इवॉल्व होची तो आंसर कोन हबो आंसर विल बी बी 2 ओनली Question number 48. Which of the following are key challenges in deciphering the Indus script? Statement 1. Short inscriptions. पूरा ठीक अछि इंडस रो जो स्क्रिप्ट अछि ताकर मैक्सिमम भी ताकर जो इंस्क्रिप्शन टा रहउछि सेटा भी बहुत शॉर्ट माने 5-6 टा सिंबल माने छोट छोट के लिखा हिथिबो एम्ति तो सेटा ताकर रहउछि स्टेटमेंट 1 टा ठीक अछि एब्सेंस ऑफ द बाइलिंगुअल टेक्स्ट कोन जहा दुईटा लैंग्वेज रे साइड बाय साइड लिखा हिथिबो सेटा होछि बाइलिंगुअल टेक्स्ट इंडस स्क्रिप्ट रो बाइलिंगुअल टेक्स्ट नो एब्सेंस ऑफ बाइलिंगुअल टेक्स्ट दिस इज करेक्ट unknown underlying language एटा भी करेक्ट से लैंग्वेज कोन थिला सेटा एपर्यंत जणा नाही तो सेटा भी डिकोड करिबा ताको हार्ड कोन लैंग्वेज थिला को लैंग्वेज लिखा हितला सेटा भी जानिबा बहुत हार्ड तो ए तीनटा स्टेटमेंट करेक्ट अछि फोर्थ स्टेटमेंट लार्ज कॉर्पस ऑफ इंस्क्रिप्शंस विथ कंप्लीट ग्रामर एटा भूल अछि लार्ज कॉर्पस ऑफ इंस्क्रिप्शन तो अच्छी किंतु कंप्लीट ग्रामर अवेलेबल नुए कंप्लीट ग्रामर टा अवेलेबल नुए ग्रामर स्ट्रक्चर बुझिया पाई तकर सेटी माने क्लियर आइडिया कहार नाही 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए Question number 49. With reference to India's defense aviation propulsion challenges, consider the following. First statement. The Kaveri engine was successfully inducted for use in LCA Tejas. Wrong. Kaveri engine pura successful नुहे. It is successful नुहे. This is not successful. ठीक अछि. तो एटा स्टेटमेंट
wrong ହେଇଗଲା. Second statement, India has no indigenous jet engine for 5th generation aircraft. This is correct. India by indigenous jet engine specifically ये जो fifth generation aircraft पाई एबे available नहीं सेथि पाई foreign help और advanced technology require पड़ुची. Foreign technology required. Foreign technology is required. This is correct. The GE Hull partnership aims to co-produce fighter jet engines in India. Eta correct. GE Hull partnership रे fighter jet engine like GE 414 ହେଇଗଲା एमती इंजिन इंडिया रे को प्रोड्यूस करिया पई प्लान अछि जहा माने फ्यूचर रे तेजस MK2 फ्यूचर एयरक्राफ्ट पई यूजफुल फॉर कोथि पई की फ्यूचर एयरक्राफ्ट पई की तार आंसर कोन हबो आंसर विल बी 2 and 3 option number B. Ajira last question number 50. After this the session will be over. Which of the following is or are quantitative monetary policy tools used by the Reserve Bank of India? Reserve Bank of India जो हमारा सेंट्रल बैंक रहिला अंको पाखरे दुई प्रकार टूल्स थाए to regulate the monetary policy, to regulate the currency in the market. First होची गोटे qualitative आउट होची quantitative. First एठी कहिची repo rate. Okay. Repo rate गोटे quantitative tool. Repo rate एटा ठीक अछि. Repo rate गोटे quantitative tool. Repo rate कोन एटा होची आरबीआई बैंक मानकु जो इंटरेस्ट रेट रे लोन दे थाए आरबीआई कोन करे जो बैंक मानकु जेतबेले लेंड करी थाए जो इंटरेस्ट रेट रे सेटा कंट्रोल करी कि से केमिति मनी सप्लाई इन्फ्लुएंस करिवो सेटा क्वांटिटेटिव टूल रे जाउची आ जो इंटरेस्ट रेट रे से बैंक मानकु लेंड करी थाए बा लोन दे थाए ताकू से इंटरेस्ट रेट ताकू रेपो रेट कहउछन्ती. सेकंड स्टेटमेंट कहिची ओपन मार्केट ऑपरेशंस. OMO कौन एटा भी गोटे क्वांटिटेटिव टूल. दिस इज करेक्ट. OMO इज अ क्वांटिटेटिव टूल. ओपन मार्केट ऑपरेशन कौन आरबीआई जेतबेले मार्केट रे लिक्विडिटी को सकअप करिया को कि रिलीज करिया को इजी मॉनेटरी पॉलिसी की टाइट मॉनेटरी पॉलिसी जेतबेले से फॉलो करे मार्केट को रेगुलेट करिवा पई सेतबेले से कोन करे से गवर्नमेंट रो जो बॉन्ड्स हे गला ताकू से केतबेले सेल करिवो ताकू केतबेले से परचेज करिवो से डिसाइड करे आ एटा एई प्रोसेस को कोन कोंदी एटा होची ओपन मार्केट ऑपरेशन. ओपन मार्केट ऑपरेशन रे कोन हुए से गवर्नमेंट बॉन्ड को जेतबेले सेल कला तो बॉन्ड बदल रे लोक माने कोन कले आरबीआई को पैसा देले तो मार्केट रू कोन हैला पैसाटा आरबीआई को आसिला तो एटा टाइट मॉनेटरी पॉलिसी रे जाए. तो जेतबेले आरबीआई लोक मानक ठारू गवर्नमेंट बॉन्ड्स सेडा से परचेज करिनिए तो से कोन करछि मार्केट को पैसा रिलीज करूछि. तो एटा होछि इजी मॉनेटरी पॉलिसी आ एई ऑपरेशंस को कहा जाए ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड दिस इज अ क्वांटिटेटिव टूल. थर्ड होछि मोरल सुएशन. एटा क्वांटिटेटिव टूल ने एटा होछि गोटे क्वालिटेटिव टूल. दिस इज अ क्वालिटेटिव टूल. आरबीआई बैंक्स को रिक्वेस्ट ऑफ परसुएशन बैंक्स को से कोन करबो रिक्वेस्ट आ परसुएशन द्वारा से मोटिवेट करे सेटा होछि मोरल सुएशन. आ एटा कंपल्सरी रूल भी नुए. फोर्थ स्टेटमेंट देखिबा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और एसएलआर. एटा करेक्ट अछि. एसएलआर भी क्वांटिटेटिव टूल रे जाए. बैंक माने तांकर टोटल डिपोजिट रे किछि परसेंटेज गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्युरिटीज रे रखंदी. बैंक माने जेतबेले तांकर टोटल डिपोजिट रू किछिटा पोर्शन से माने गवर्नमेंट एक्वायर्ड सिक्युरिटीज रे से माने रखुचंती. एटा भी मनी सप्लाई कंट्रोल करे. तो एटा गोटे क्वांटिटेटिव टूल रे एटा गणा जाए. ठीक अछि. तो एठी हमें कोन देखले रेपो हे गला OMO SLR क्वांटिटेटिव टूल
moral suasion ହେଇଗଲା ଏଟା ହଉଛି qualitative tool. So this session is over. Thank you for watching.